हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड is the English analysis. So friends, we saw today again another round of selling and did touch a low of 81 and slowly recovered a bit up to 81.31, 81.31 and the low of 81 which was touched, and then we are slowly in the zone where we are at around 81.20, 81 sorry 81.20. Okay, this is a very important zone. I'll tell you why. If you look at the 1 day chart, if I go here, this is the same zone from where a good bounce came up. So this zone is untested. This zone is very important, and if we cut this zone, और अगर इस zone, if अगर ये zone को हमने break कर दिया नीचे, तो हम जा सकते हैं फ्रेंड्स वापस 80.50 तक। पर ये जो जोन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है फ्रेंड्स। तो आज हमारा जो ट्रेडिंग हुआ तो वो नीचे के ट्रेंड के तरफ हुआ है फ्रेंड्स, और ये जोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कल के लिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए कल के लिए मैं थोड़ा एक बड़ा रेंज लेता हूँ फ्रेंड्स, और आपको एक ही बात बोलूँगा कि कल अगर स्पॉट एक लाइन है यहाँ पे जो है 81.27, कल अगर स्पॉट 81.27 के ऊपर ट्रेड करता है तो बाई साइड रहेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 81.37, उसके बाद द नेक्स्ट टारगेट विल बी यहाँ पे 81.43। अगर 81.27 के नीचे रहता है, या मेरा एक और लेवल है जो ये है, ये 81.20, अगर 81.20 के नीचे रहता है स्पॉट तो हम ट्रेड कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। पहला लेवल होगा 81.12, दूसरा लेवल होगा 81.04। अगर 04 को तोड़ा तो अच्छा खासा डाउन साइड मूवमेंट आएगा फ्रेंड्स, अच्छा खासा सेलिंग आएगा जो आपको 80-50 तक भी ले जा सकता है। तो अगर बहुत ही क्रिटिकल नंबर डाउन साइड में देखने के लिए है 81.04, उसको ब्रेक करेगा तो बहुत ही नीचे जा सकता है फ्रेंड्स। और क्रिटिकल नंबर जो अपसाइड डिसाइड करेगा वो है 81.27 स्पॉट पे। तो प्लीज़ इस नंबर पे फोकस कीजिए और ये नोट्स बना लीजिए ताकि आपको कल ट्रेडिंग करने में आसानी हो जाए। और कल एक्सपायरी भी है तो वॉलेटिलिटी बहुत ही लिमिटेड रहेगी या ज़्यादा भी रह सकती है। तो पोजीशन ना ले, शायद एक्सपायरी के बाद पोजीशन ले ताकि थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। गोल्ड पे नज़र बनाए रखिए क्योंकि गोल्ड बहुत ही आगे आगे बढ़ रहा है। जितना गोल्ड बढ़ेगा उतना इंडिया का रुपी स्ट्रांग हो जाएगा फ्रेंड्स। तो उस पर भी एक वॉच रखिए ताकि आप अच्छा ट्रेड लेके अच्छा प्रॉफिट कमा पाए। ऑलराइट फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइमर है मेरे चैनल के लिए तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और मेरा एक प्रीमियम चैनल भी है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली ट्रेड और डेली कॉल्स भी देता हूँ फ्रेंड्स। Now we're going to do the analysis in English. So friends, today has been a very a day again of high pressure selling. So if we could see here, yesterday night, this is the 1 hour chart, and yesterday night we closed somewhere here near 81.37, and morning there was a gap up, gap down, and in that gap down we touched a low of 81 and slowly came up to the level of 81.31. All right, and then again the same moves continue down and up continues because tomorrow is an expiry. The only strong point is that the gold is very strong at this point of time, which is also impacting the movement. At the same time, bond yields and DXY falling is a clear indication that US dollar is not as strong as it should be. A clear trend fall we can see exactly from this level of 81.62 and below. It's just been a fall to 81 levels. So friends, what is it that we can do for tomorrow? That is something that we need to clearly see. So for tomorrow friends,
My tomorrow is being an expiry. My role will be very simple. What I will be looking forward for is a number which is here. This level is what I am looking for, which is 81.27. If spot is above 81.27 or gives me a closing candle above 81.27, I will be on the buying side tomorrow. My first target that I would look forward for is 81.37, and my next target that I would look forward is 81.43. This is my small upside target because gold is very strong and bonds are very strong. You cannot expect an upside to happen suddenly. There's not going to be a big movement on the upside easily. That's why I'm giving you a smaller target. On the downside, friends, a very important level is right here, which is 81.2. If tomorrow spot breaks 81.2 on the downside, then on the downside many targets will open. The first target is 81.12. The second target I am seeing, because 81.10 again will not be defended, it will go to 81.04. And if 81.04 breaks, friends, it can go as low as 81 80 and even to 80.50 also. So that's the kind of magnitude of downtrend that I am seeing, which is possible. So let's be careful in the market tomorrow, and let's don't take any hasty decision of on the buying side. Until the gold is strong, it is pretty difficult for dollar to gain any momentum. That's what I am seeing, friends. And this is going to be the numbers that I'm going to be focusing on for tomorrow, and tomorrow being the expiry. I hope you're liking my videos, friends. Please do subscribe to our channel, and for all the first timers who are joining my channel, please subscribe to my channel so that you get the notification, because I do daily analysis and I give levels so that it can help you to take better trades the next day whenever you start trading. All right, thank you so much, friends. Have a good day. We'll see you in the markets tomorrow.